Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Truth is that which remains unchanged in all the three periods of time. One who revels in the constant reflection upon truth naturally withdraws his attention from the ever-changing phenomenal world comprising the body, mind, intellect, equipments, and their world of objects, emotions, thoughts. One who has withdrawn from all his identifications with the equipments is liberated from the persecutions of the world of objects. Such an individual comes to experience the eternal glory of the self. When one gets liberated from the thraldom of the equipments, the ego means the small I inside, perceiver, feeler, thinker from extinct. Naturally, therefore, one thereby reaches the higher claims of truth. An honest man, বই দেওয়ার দরকার নেই, শুনুক শুনুক শুনুক, বইটা বাড়ির জন্য। An honest man and a dishonest cheat are the examples for both the above cases. One who is reveling in the constant reflection upon the untruth, the equipments and objects come to destruction. He is pushed into more and more confusions and sorrows, passions, lust, together creating for himself a painful life of tension, stress. So whenever you will feel stressed, depressed, anxious, what will happen tomorrow? What will happen after 1 hour? Always anxious. You should know you are far away from Shastra. Maybe you have memorized 100,000 of slokas. Maybe you prostrate a Swami Bhagavan 100,000 times. Maybe you know I am a great believer or devotee of Bhagavan. If you have the anxiety that what will happen after that, you should know you have not complete faith in Bhagavan. जिनको भगवान के ऊपर पूरा के पूरा विश्वास रहते हैं, वो व्यक्ति निश्चिंत है।
हम लोग सोचते हैं कि बहुत विश्वास है, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत 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 बार शास्त्र पढ़ते हैं, रट लेते हैं, बातों बातों में वो रटा हुआ मंत्र या श्लोक हम लोग बोल देते हैं. But when that time comes, we give a test. भगवान परीक्षा ले लेते हैं. जो व्यक्ति एंग्सियस है, बहुत एंजाइटी में, उस व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म चिंता की अभाव है. Maybe he or she is supremely educated, qualified, means degree holder. पार्थिव विषय में बहुत सारे डिग्री कमाया, लेकिन जीवन के बारे में सूक्ष्म चिंतन कभी नहीं किया. That everything happens. Everything happens with someone's wishes. Everything is pre-designed, pre-programmed. Accept everything else. I told you that I had a trip program this year, this time, that I will go there. When I got down from the train, came to know that road is closed. We started a different journey. There also I came to know that road is closed. Believe me, yesterday one of them who accompanied me came on the road, on the way. That's so cool. रास्ता बंद है तो बंद है, चलो दूसरी कोई जगह पर. And we stationed at Uttarkashi. Our own Swamiji greeted us very nicely. जीवन में हर स्टेप में, if you can see the grace of God, you are the most peaceful person, you are the most wealthy person. धन लक्ष करोड़ कमान जी, अंत समय नहीं एकाधेन. An honest man does honest things and therefore he is happy. Honest means भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वासी. You can tell that a lot of people are there, Swamiji. In my life, we have seen many, lot of tilak, always they are taking the name of God, but cheat people. हमारे पास तो भगवान के ऊपर विश्वास की प्रतीक तिलक नहीं होता, जीवन होता है. इस युग में जिनको अवतार मानते हैं भगवान श्री राम कृष्ण, उनको पिक्चर देखिए, ना तो उनके माथे पर तिलक है और ना तो फगुआ है.
चमड़े का चप्पल, ग्रीन कुर्ता, सफेद धोती। 100%, 200%, 500% mind was soaked into Lord. Never uttered anything else, any wrong, any dishonest word, any lie. भगवान के ऊपर विश्वास है या नहीं, ये जीवन की प्रकाश से पहचान। तिलक से नहीं, फगुआ से नहीं, रुद्राक्ष से नहीं। लोगों को दिखा सकते हैं कि नया कपड़ा है, फगुआ है, प्रणाम करो मुझे। यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय। You can share with यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय स्वयं अयमहमस्मीत्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्। Stop. सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परमविद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय स्वयं अयम अहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परमविद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। यति ही सन्यासी बंध हेतुम, नो नो, ये तो कल हो गया, এটা হয়নি। बाह्यानुसंधि, एक मिनट, কালকে আমরা কি করলাম? এইটা না, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसन्धि परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्य अनुसंधि, क्लोज बुक्स। अनुसंधि मीन्स
अनुसंधित सा, अनुसंधान करने की इच्छा को बोलते हैं अनुसंधित सा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने को इच्छे को बोलते हैं जिज्ञासा। पातुम इच्छा पिपासा, पान करने की इच्छा। ऐसे ही अनुसंधान करने की जो इच्छा है इसको अनुसंधित्सा बोलते हैं। बाह्यानुसंधि, हम किस चीज को अनुसंधान करते हैं न, जिसके ऊपर हमारा प्रीति है, प्रेम है, जानने की बहुत इच्छा है। आपके आप सब में भगवान के ऊपर, सत्य के ऊपर प्रेम तो जरूर है, नहीं तो आप आएंगे क्यों? इसलिए तो आप लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, ये क्या ऑनलाइन हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लव। बट बाह्यानुसंधि, बाह्य विषय में जिनका प्रेम है, ततः ततः अधिकात् दुर्वासनाम एव फलम परिवर्धयेत्। As much as you will thrive for the external thing, parinam is dukkham, 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 dukkham. जो वस्तु मिथ्या है, मिथ्या वस्तु कभी भी परम सुख नहीं दे सकता है। परम वस्तु ही सुख दे। आप एक भी चीज निकालिए, एक भी व्यक्ति दिखाइए जिनको आप परम प्रेम से गले लगाया और वो दुख नहीं दिया। गुरु को छोड़कर, क्योंकि गुरु की आचरण पहले से ही दुखदाई होता है। हु इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर हम लोग कभी पंचदशी पढ़ूंगा तो ये पूरा साफ हो जाएगा। गुरु का रोल ही ऐसा है। बहुत लोग जीते जी या गुरु के शरीर रहते हुए उनकी आचरण की अनुधावन कर सकते हैं। किसी को लगता है ही इज वेरी पार्शियल। मैक्सिमम केसेस happens. In our case also happened. In me also happened it once. Really it happened, but once by the grace of Guru. I thought such a partial person. But lastly, I told myself that it should not be. After many years, I understood that it was required. Really speaking, it happens. क्योंकि बहुत लोग आते हैं। Guru is like a doctor, and the devotees are like patients. Sometimes two patients are suffering from absolute opposite diseases, but symptoms are same. पेट में दर्द सिर्फ डायरिया से नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। दवाई अलग है।
But if you visit a doctor, fixing in your mind that this medicine has to be prescribed, तब तो मुश्किल है. You have to 100% believe in the doctor that whatever the medicine he is prescribing, in that I will be cured. ये चिकित्सा विज्ञान की 70% is based on विश्वास. In physical sense, I talked to many doctors. Even yesterday, I was introduced with a very world-famous doctor, Dr. Sundar Narayan. His son is doing research and teaching in Cambridge. And lastly, he told me that Swamiji, you know, our science and everything else, our medicine, works for 30%. 70% depends on the patient's belief system. That is their research work. The doctor is the specialist in internal medicine. If you believe 100% that this doctor can cure me, whatever the medicine he will prescribe, that patient gets cured much earlier than others. क्योंकि बीमारी तो मन में है, लगता है शरीर में, प्रकाशित होता है शरीर से. दवाई भी काम करते हैं पहले मन में. If you don't, फर्स्ट गेटवे में ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खाना पका नहीं किया, आलू का दम बनाएंगे, पहला स्टेप तो आलू को उबालना. उसमें ही अगर दिक्कत हो गया कि नहीं उबला या ज्यादा उबल गया, जितना भी अच्छा मसाला आप बनाओ, जमेगा नहीं. First step you have to do correctly. And here in the spiritual world or medical field, believe, 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 believe. Absolutely belief system. That is why nowadays people don't say religion, because I attend so many international seminars, you know. They told that people have come from different belief system. People have come different faith system. Now people don't call us as religious leaders. They called faith leader. Because this area is absolutely based on faith. Shraddha. And only Shraddhavan lavati jnanam. Unless and until you are having 100% Shraddha, 100% jnanam is not possible. ताला और चाबी का नाप तो एक ही होता है. If it is little bigger, it will not enter. If it is small, घुसेगा लेकिन काम नहीं होगा. श्रद्धा एंड ज्ञानम, ये लॉक एंड की है. एक झटका में खुल जाएगा. इतना बड़ा ज्ञान, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर इतना सा है, लेकिन 100% है, क्योंकि जितना भी बड़ा आप
लॉक लगाओ, चाबी तो छोटा ही होता है। ज्ञान तो समुंदर है। क्लियर। बाह्यानुसंधि ही ततः ततः अधिकात्, जितना जितना बढ़ाएंगे दुर्वासनाम एव फलम, दुखदायक वासना रूप फल परिवर्धायत, बढ़ते ही रहते हैं। आशा राशा भवे राशा, आशा मात्र हो। और दिस विवेक ही ज्ञात्वा बाह्यम परिहृत्य नित्यम स्वात्मानुसंधिम विदधीत। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञात्वा जानकर, बाह्यम परिहृत्य विषय चिंता को परित्याग करके, नित्यम ऑलवेज स्वात्मानुसंधिन, स्व आत्मा अनुसंधान, अपने आत्मा की अनुसंधान। ये भगवान भूला नहीं, क्योंकि भगवान गीता में भी मेडिटेशन चैप्टर में बताया है, नासिकाग्र में दृष्टि की रखने, और बोलना भूलने गया कि अपने नासिका के अग्र में। नहीं तो आप ध्यान में बैठकर सब लोगों का नाक देखना चालू करेंगे तो वो मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए इधर भी भगवत पाद शंकराचार्य ने बताया स्व आत्मानुसंधिन, दूसरे का विचार नहीं, खुद का विचार। विशेष रूपेण अधीत, जितना आत्मा अनुसंधान करेंगे, फ्रॉम एक्सट्रोवर्टेडनेस यू विल बिकम इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड डजंट मीन्स कोई कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नहीं है, एंड दे आर वेरी प्राउड, आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट, बट दे कीप अ कीन आई ऑन एवरीथिंग एल्स, और अंदर में उसके बारे में सोचते हैं, प्रकाश कुछ भी है। ये इंट्रोवर्टनेस नहीं बोलते, ये डेंजरस देन एक्सट्रोवर्टेडनेस। इंट्रोवर्टेडनेस मीन्स नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स ऑन विषय। आत्मानुसंधान कैसे चालू करूंगा? इसमें भगवान के ऊपर विश्वास में सुविधा होता है। पहले जप, भगवान को, इष्ट को हृदय मंदिर में स्थापन करके, गुरु को अष्टदल पद्म में स्थापन करके, जब गुरु और भगवान में मन लीन हो जाएगा, तब सुविधा होता है। हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या प्रॉब्लम है मेरा, ये सच में प्रॉब्लम है, मैं किसके लिए चिंतित हूं, अगर ये नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये हो जाएगा फिर भी क्या होगा। किसी किसी ने बताया ये देखा नहीं, अरे देखा नहीं तो क्या हुआ, हजारों करोड़ों चीज तो तुम देखा नहीं। व्हाट यू आर सीइंग, कैन यू रिजॉयस ऑन इट? एक धान की शीश में जो एक शिशिर बिंदु, उसका जो ब्यूटी, একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দু।
আমরা কি তার আনন্দ নিতে পেরেছি? सौंदर्य मन में है। जिनका मन सुंदर है उसके मन में हर वक्त सारे समान सुंदर रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि जिसको हम पसंद नहीं करते हैं वही व्यक्ति किसी का प्रिय है, तो मतलब व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम तो मेरा मन में है। आई हैव एक्सेप्टेड दैट पर्सन इन दैट मैनर। If we can correct our mind, the whole world is beautiful. And how I can correct it? With the help of Lord. The whole universe is nothing but His body. The whole universe is nothing but His creation. I am His creation. I told you about a businessman. He on and often comes to me. Nearly 6,000 crore rupees he has done business last year. उनका एक बात मुझे इतना अच्छा लगा, विश्वास कीजिए मैं टाइम मिलते ही क्लास में बोलता। तो मैं पूछा कि आपको महसूस क्या हुआ, कैसे लग रहा है? बोला मुझे तो सिर्फ एक ही लग रहा है कि अगर मैं भगवान से कुछ चाहता तो कितना बड़ा लॉस हो जाता। आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी मीडियोकर फैमिली where nobody did business. I started a venture with small thing, selling mobile phone, mobile parts. But every time I started floating with the flow, sometime loss, sometime gain, and I had 100% faith in Lord. मैं तो कभी 1 करोड़ का भी स्वप्न नहीं देखा स्वामी जी, उन्होंने बताया मुझे। अगर मैं भगवान से कुछ मांगता तो कितना बड़ा लॉस हो जाता मेरा जीवन में। What a wonderful thing. And we expect a lot. This thing at 9 o'clock, that will happen. At 10 o'clock, this will happen. And 11 o'clock, he will come. At 12 o'clock, she will come. And if they don't come, I am anxious. When they will come, I am anxious. 12 क्यों नहीं बज रहा है घड़ी में? घड़ी का मैं घुमा रहा, हमारे आप घुमाने से तो टाइम नहीं घुमाए। We don't believe in God. Really speaking, we don't believe 100% in God. भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ाइए, जीवन की सारे समस्या खत्म हो जाए, सारे समस्या। You are the spiritual student, that's why I have courage to say you that. If you have any problem, if you feel Swami ji थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा बहुत विश्वास की कम हो गया, you just think of it. If you are through constant yearning, continuously in contact with the outer world, the dire results will multiply. What are these natural dire results? The results of contacting the world outside are vasanas, which are to manifest as desire and agitations. The more you turn outward,
the more the inner entanglements will increase. When you are turned outwards, the agitations, vikshepa, get multiplied, and hence vasanas and desires multiply in leaps and bounds within. Thereafter, prompted by your own vasanas, more and more desires arise, which create more and more agitations, and which in their turn prompt more and more activities. Those who get the discriminative power and the scientific spirit of detachment from not self, which is called vairagya, understand how they have earned and why they have reached this chaotic condition in life. Such individuals, having thus understood, leave all the outer contacts, meaning withdraw their consciousness as much as possible through practice from the body, from the mind, from the intellect. Not perceiving the objects, not feeling the emotions, and not contacting the world, even at thoughts. In such quiet moments, their entire attention turns inward. And this is possible. Unless you give the mind another point of contact, it cannot heave itself away from its present fields of attention. A divine altar of devotion and reverence is needed, at which alone you can surrender your world, craving mind in a spirit of utter dedication. So through constant practice, you will come to experience this contact with the higher. An individual who has with discrimination thus understood the cause for all his pitfalls and sorrows must strive to withdraw himself from all his mental entanglements and be released from its usual conditionings. Then he can feel himself ushered into a greater ambit of freedom, a greater fullness of existence. What is the takeaway message? By doing constant viveka, discrimination, thinking, a great understanding, we should know who actually I am, what actually the world is, what is the relationship, actual relationship with me and the world. If you don't recognize in the external, in the transaction world, if you can't recognize yourself as a role player, तब तो मुश्किल है. We are all actors and actresses, playing different roles with the different person, with the different time frame. And in the Paramarthic world, with the help of Shastra, we are Atma, we are Brahman, devoid of any connection with anything else.
We have no pain, no suffering, no anxiety, no depression. We are happiness alone. A simple sadhana. But the problem is whenever the class is over, the little bit of breakfast prasad is served, and we go out of the classroom, we forget everything else, and our samsara continues. That has to be stopped. Hari Om Tat Sat. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om to everyone. Hari Om to Vijayamma. Hari Om to Mr. and Mrs. Chatterjee. Hari Om to Ilama. Hari Om to Poddar. Hari Om to Ghosh Babu. Hari Om to Mr. and Arjaji and Soumya. Today's class was clear to you, na? Yes, thank you. Thank you very much. Have a good day. Today is Wednesday. So Ramcharitmanas in Bengali in the evening. And 1st October and 2nd October, there is a musical workshop. Durga Puja is coming, so songs on Ma Durga will be taught over here, 4 to 6 in the mission. Each and every one is cordially invited. 4 to 6 p.m. And those who want to learn, please register your name. Absolutely free of cost. No money is needed. Registration tomorrow? আমি সেসব জানি না। আমায় যতটুকু বলতে বলেছে মা বলে দিয়েছে, বাকিটা আমি জানি না। Online, let's see what happens. Actually, problem नहीं है online में, इस Zoom में ना संगीत नहीं लेता. That is the problem. I don't know why. मैं इतना बोलता हूँ सब होता है, लेकिन जब संगीत चालू होता है ना, Zoom कैच नहीं कर पाता. I will try to do YouTube live if it is possible. Then I will check whether the problem is in the gadget or in the system. Okay. Hari Om.